shit's fantastic. For the ages, feels like it's magic. Hear the clock been haunting my dreams. It's been ticking for hours, ticking for hours. Yeah, we late, but this shit's fantastic. For the ages, feels like it's magic. Hear the clock been on. Yeah, we late, but this shit's fantastic. For the ages, feels like it's magic. Hear the clock been haunting my dreams. It's been ticking for hours, ticking for hours. Yeah, I feel so old. Gotta waste no time, gotta wait in line, and the weather's so cold. Should've brought my coat at the end of the line, all my shit untold. Messed up a lot, used to be waiting for something or someone to give me my spot. God only show you the way, it's all up to the plan and the paper and people you brought. I learned what I thought, I hope that they notice and give us a shot. I swear me team, been lying a lot, might give us away. And what is the cost? The truth I won't face, I think that we caught. I hear what you say, but jealousy rots the brain, the fame, the game. I know you a fan of me, feeling me, you can't compare to me, calling the SWAT. Time is running out, it's been moving, but we still don't have the crowd. Money in my head, but not my bank account. Clock is ticking fast. Yeah, we late, but this shit's fantastic. For the ages, feels like it's magic. Hear the clock been haunting my dreams. It's been ticking for hours, ticking for hours. Time, gotta reach inside of my backpack, look back, what's that, fuck that. Feeling like bear beast, scary beast down, can't find where my nuts at, yeah. Run it back, time don't love me, rub me like I got a humpback, jump back, bite me, gonna fight me while I'm typing, these are my thoughts. Yeah, and I'm done with the wild shit, yeah, a lot more time than I could've had with Jack. Clock always ticking, but the time I'm making up, better not for the doubt. Living for the thing I love, it's just all about the journey, I'm enjoying what I'm doing. Got this mission from above, like the witches I'll be brewing, coming soon to a theater near you, not a sequel. Revenge of the Sith, yeah, bitch, it's a prequel. Wherever in this world I roam, I carry memories of my home. Hello. This blade. It is the last link I have to the land of my Hello guys. गेम का आवाज ज्यादा है क्या? मुझे ज्यादा लग रहा है गेम का आवाज इधर, तो उधर का सीन पता नहीं मुझे। गेम का आवाज ज्यादा है कम है बताओ भाई, कोई स्ट्रीम में है क्या? खाना वाना खा के मैं तो रेडी हो गया, लाइव करते हैं अब, थोड़ा सा खेलते हैं जेंशिन। There are leaves around, and I know just the tune to accompany them, if you wish to hear it. सही है मेरा आवाज? Talk to the Electro Archon whenever you are troubled. चलो स्ट्रीम में कोई जॉन होगा तो बोल ही देगा। क्या था मेरा? टॉक टू मार्की। हाँ यार, टॉक टू इलेक्ट्रो आर्कॉन। क्या है रे? क्या बोल रही है? अभी छत साफ करने मत भेज देना मुझे, दिमाग खराब हो जाएगा। छत साफ करने मत भेजना मुझे, फिर ऊपर चढ़ो नेक्स्ट बस।
जल्दी जल्दी खत्म करके। यार आवाज तो आ रहा है ना मेरा? स्ट्रीम में कोई हो? आवाज तो सही है। हेलो हेलो हेलो, आवाज सही है? हाँ सही है। Narukami, please. गो टू द Tell me रूफ। you stay वाह, safe. जो बोला था वही किया सा। इधर से चढ़ ही नहीं सकता मैं, चढ़ कहाँ रहा हूँ? साला थोड़ा सा साइड में जाना था। इधर इधर हो सकता है। Follow the wind. कहाँ पे साफ करना था? वहां पे। पिकअप। यस, मिशन कंप्लीट। अब सेकंड वाला स्प्रेडिंग इवल। कहाँ पे बबुआ? Narukami. Time to go. बड़ा आइटम है क्या कोई नया नाम? पिद्दी पिद्दी सही है। लम आउटेड हो जाएंगे। अबे चढ़ कहाँ रहा है? ये हर वक्त का सीन है भाई। The wind knows me. Time to go. Let's light it up. There is no escape. Dead. अबे काम करो, ये एकजुट करो, पैसे दबा के ले लो। अबे लेना, एफ तो दबाया। वर्ल्ड्स भाई गाइस, कोई स्ट्रीम में नहीं आया, क्या बात है? कोई है तो स्ट्रीम में यार, लाइक वगैरह ठोक दो यार। गेम्स खेलने बोलते हो और आता ही नहीं हो कोई भी स्ट्रीम में देखने। मुझे डिमोटिवेट कर देते हो यार तुम तो। क्या करना है? I follow the wind. ओहो, और ये लोग भी आएंगे क्या? Shine down. Into the wind. तो अपने आप ही Time to go. शॉक खा खा के मर जाएंगे शायद से। नहीं मरे का। One with nature. पर चलो, और कहाँ था ये? पब्लिक तो है ना? हाँ, देखने के नोटिफिकेशन नहीं गया क्या? Time to go.
ओह शिट तो भाई Adventure time. तुम लोग एक काम कर नहीं Nothing to भाई fear. Order guide you. ये तो खाओ Inazuma shines eternal. क्यों जानबूझ के पानी के पास देते हैं भाई जैसे फंसा दें देखे ना क्या कर दिया जगह को The world remains constant over the centuries, but human life is like the dew at dawn, or a bubble rising through water. Transitory. यार उनको व्हाट्सएप में भेजना पड़ता है Inactivity serves no purpose whatsoever. छोड़ो यार जेंशन कोई पसंद ही नहीं करता मैं जब खेलता हूँ बंदों के स्ट्रीम में जा के कुछ ना काम भाई बैठे रहते हैं बंदे मेरे पे भी आता है कहाँ जाना था कहाँ चढ़ रहा है भाई नीचे उतर जा भाई नाइस आज का डेली कमीशन खत्म चलो सुमेरु सिटी चलते हैं वहां पे जाके कलेक्ट करेंगे यार जो भी स्ट्रीम में आ रहे हो लाइक ठोक दो शेयर भी कर दो यार दोस्त लोगों से कोई आगे देख ले कोई नहीं देखता यार कैथरीन किधर गई इधर
extra ab. Thank you for completing today's commissions. थैंक यू यार, थैंक यू किस बात का, वो तो करते हैं भाई। जगह बड़ा पीसफुल है भाई। रेडी क्लस्टी ओपी, हाय, वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो। विश्वजीत, वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रदर। यस भाई, मैं तो रेडी, पूरा खतरनाक रेडी। All the world holds dear is but a backdrop of constant motion. I stand before it, alone and unchanging. लाइक ठोक दो गाइस, लाइक ठोक दो। अब मेरा मिशन क्या क्या बचा? कुकिंग एंड ब्यूटी ऑफ शेयरिंग, ये कर देते हैं। कहाँ से घुसना था अंदर मुझे? नीचे से। लग तो रहा है। यही कहीं से जाना था मुझे तो। ओहो सॉरी, गलत हो गया, गलत हो गया। सीओडी खेल, हाँ हाँ सीओडी खेलूंगा ना, तू क्या चिंता कर रहा है? लैपटॉप पे सीओडी खेलूंगा मैं, जैसे तेरा आईडी जल्दी ही बैन हो जाएगा। मत लिख ऐसे वर्ड, नहीं तो फिर नाइट बोर्ड तेरे लवड़े लगा देगा फिर। यार मर जाएगा नीचे गिर के। अबे तू खेल ना थोड़ा सा, तू सीओडी खेल, तेरा आईडी पे थोड़ा सा। मैं खेल रहा था ना तेरे आईडी पे 2-3 दिन पहले, एडिट तो किया था, तेरे को भेजा था ना मैंने, देखा नहीं तूने? मैं खेल रहा हूँ इसीलिए मुझे दे देता है आरपी करने, नहीं खुद नौकरी कर रहा है, पैसे कमा रहा है और मेरे को दे देता है आईडी खेलने। साले खेल लूंगा, चिंता मत कर। 2-3 दिन में ही तेरा 50 आरपी कर दूं मैं सर्च एंड डिस्ट्रॉय खेल के। तू क्यों चिंता कर रहा है? Why are you taking tension, my brother? कहाँ पे बहस के अंदर मर कहाँ रहा है ये बंदा? इसके अंदर मर रहा है। ये क्या है? इसके अंदर है क्या? हाँ इसी के अंदर है। और स्नुर ये रहे सरदार। कर दूंगा एसएनडी, खेल लूंगा ना, कितना 15-20 खेल लूंगा तो हो जाएगा तेरा 50 यार। एसएनडी में बहुत जल्दी होता है, इसीलिए तो मैंने टाइम लिया है तेरे आईडी में। चिंता मत कर दूंगा तेरा 50 होगा, ये मेरा वादा है। क्या पापा मैं कुछ गैस, 1 मिनट काम आ गया। डाकी परिवीन टिसोनी वे 88 नंबर। डेंड्रो एलिमेंट वो करना था ना मुझे।
फास्ट रो 9 घंटा छाड़ी क्या सब Just what will become a... कहाँ है भाई तू? Scatter! अब जग गया। इनका नींद तोड़ने के लिए कैरेक्टर का डेंड्रो वो यूज करना पड़ता है। वाह, कहाँ गया मेरा बेनेट? कहाँ गया भाई? बेनेट बेनेट यार। Gonna be epic. Yeah, gonna be epic। ये मैंने क्यों किया? फंस भी गया ऊपर से। टाटा टाटा बोय बोय। ऊपर पा 9 একটা ছাড়ি গেছে বলে কিছু তো ঠিক হবে। शेखर को जाए, शेखर को कौन सी जो मम्मी जोर से बात करती है ना तो आवाज नहीं आती, कान में चुभती बहुत है ईयरफोन लगाने के बाद। It sounds really tough, but I can do it. गाइस स्ट्रीम में इतने बंदे आए थे, किसी ने बोला नहीं मेरा आवाज वगैरह और गेम का साउंड वगैरह आ रहा है कि नहीं? Return to the camp with अरपाला। ओके, सुमेरु पूरा इंडिया मतलब उस पे संस्कृत वगैरह में बेस्ड है। ये लोग भाई जेंशिन वाले देख देख के पूरा नाम वगैरह ला रहे हैं। गंधर्व विलेज कितना क्या है भाई, मस्त बनाया सुमेरु को पूरा यार, ग्रीन ग्रीन। गाइस मैं रेगुलर सीओडी भी खेला करूंगा, तो सीओडी के बंदे भी आके देख सकते हो। आज तो मैं खत्म करूंगा। कितने बजे अभी? 8:30 बजे। मैं 7 से 11 बजे तक स्ट्रीम करूंगा शायद से। आज खत्म करूंगा इसको। जो भी आ रहे हो स्ट्रीम में थैंक यू ज्वाइन होने के लिए। मैं रेगुलर स्ट्रीम करूंगा ना तो मेरा बात करना थोड़ा वो हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। मैं थोड़ा दब दब के बात करता हूँ भाई। मैं कितने दिनों से लगा हुआ था जेंशिन का मतलब वो करने के लिए स्ट्रीम वगैरह। मेरा वो एनकोडर का दिक्कत था ओबीएस स्टूडियो में। वो भाई क्लस्टी ओपी गेमिंग नाम का मेरे एक दोस्त ने कर दिया। उसका चैनल भी जाके सब्सक्राइब कर दो। बीजीएमआई का वो रैंक पुश वगैरह करता है, उसका भी चैनल जाके सब्सक्राइब कर दो गाइस, सब्सक्राइब। तो अब कौन सा मिशन रहा? ये कहाँ पे है? 1400 बहुत दूर है। इस सेनोरिटा पॉट का क्यों मैं तो इसको यूज भी नहीं करता भाई, ये क्यों दिखाता है? एक दो तीन चार पाँच, यस नाइस।
देयर एजेस। मैं जल्दी जल्दी स्किप मार रहा हूँ गाइस, किसी को अगर देखना होगा तो सॉरी। बोर बहुत लगता है क्योंकि लोग बात नहीं करते ना। ऐसे मोस्टली क्वेस्ट होते हैं जिसमें बात करके ये लोग काम करते हैं, ऐसे छोटे छोटे वाले क्वेस्ट में लोग बात नहीं करते। आर्कोन क्वेस्ट में बात करते हैं, वर्ल्ड क्वेस्ट में बात नहीं करते। ये बड़ी गंदी चीज है। मास्टर शेफ नारा मिला अचीवमेंट, मुझे कलेक्ट कर लेता हूँ फटाक से, नहीं रहा जाता मेरे से। ओके, अब और क्या बचा? एडवेंचर विद अराना। ओ भाई कितना कुछ खुला भाई ये तो। मतलब है पर मिल नहीं रहा, मुझे देखना पड़ेगा। Wherever in this world I roam, हाँ हाँ तो रोम कर। चलो carry अभी नेविगेट memories of कहाँ my पे कर रहे हैं? home. चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट। This blade. It कहाँ is the जाना, last कहाँ है? link I have वही तो ये लोग नहीं दिखाते कहाँ जाना है, बोल देते हैं to the land of यहाँ my जाओ birth. वहाँ जाओ। अभी हेल्प राना, find help paraना, prepare festival उससे could be document storage clues for the adventure। ओहो मेरे को वो पढ़ना पड़ेगा, तो और भी मुश्किल बात है। completed। obtain 3 Vasuma fruits from the Vashara trees in the 𝗟𝗚𝗏𝗏 will help me। चलो observe the Sumeru roses to find the hidden song। ओके यहाँ पे these patterns may have some connection with the hidden song in the roses। तो कभी रोज ढूंढना है, वो ये रहा ना। observe the Sumeru roses, percept। Z दबा के कुछ करना है क्या? नहीं नहीं नहीं, हो गया हो गया हो गया। प्ले म्यूजिक। ओ दिस इज अराजी सॉन्ग। स्किप करो भाई, इनका बात सुनूंगा तो रात डूब जाएगी फिर।
हेड टू द डेजिग्नेटेड लोकेशन। इधर जाना है कहाँ? यार गाइस 10 लाइक्स कर दो यार। 3 लाइक्स क्या कर रखे हो? गंदी बात है भाई ये। 10 लाइक्स कंप्लीट करवाओ। मुझे ऊपर जाना है, घूम के बाहर निकलना पड़ा। Time to go. अरे यार तुम लोग के फाइट करने के लिए टाइम नहीं है। भाग 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 भाग। नहीं नहीं ही करके मत आ, डैमेज दे देगा अभी ये। इसके आगे मैं भागूं पहले यहाँ से। पे कहीं वो कूदने वाला नहीं है, पीछा नहीं छोड़ेगा मेरा। थोड़ा सा स्टैमिना बन जाए, मैं उड़ जाऊं। नाइस। चलो लेट्स गो। आराम से भागा दौड़ी कर सकता हूँ मैं। अरे अरे चैट देखने में बिजी हो गया था, इधर घुस गया हिलीचल्स के नेस्ट में, कैंप में घुस गया। आ गया डेजिग्नेटेड लोकेशन पे। यहाँ पे कुछ करना है क्या? अरे क्यों भाई? मार दो मुझे, काम करो भैंस क्या। क्या करना है यहाँ पे? वो गाना बजाना है। यार शांति से मारना ही पड़ेगा इन्हें, शांति से काम नहीं करने देंगे। मर गया क्या वो? हाँ मर गया। अब शांति से काम करने दो भाई। पानी बोतल टा लटके पीवा। पानी बोतल टा कहीं वो। Enter the gloomy path of the woods. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? What? दुनिया के अलग कोने में आ गया। Oh shit. Solidify.
अबे इनको मानना पड़ेगा, नहीं तो ये फिर दिमाग खराब करेगा। मर तो जाऊंगा मैं इधर, पहले से ही हेल्थ वगैरह डाउन कर देते हैं मेरे, फिर कैरेक्टर भी नहीं है। कहाँ गया वो? छोड़ो यार उसे। पार्टी सेटअप। क्या हो गया? क्यों मर रहा है यार ये नीचे? कोने में घुसा हुआ है, देखना कैसे। यहाँ पे पार्टी सेटअप। सुमो ए क्लैश ऑफ डाइनो, वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो। कहाँ गया मेरा कहाँ गया? Time to begin work? Yeah. तो कहाँ पे है वो? ऊपर है क्या ये? Next on the agenda. ना क्या खुल रहा है? मत खुल। हाँ हाँ पहचान गया, दिक्कू है तू। मत मर, मारेंगे ये तेरे को। मेरे को वो प्लांट कहाँ पे है? Time to go. Into the wind. There is no escape. कहाँ पे इशारे कर रहा है? हाँ ओपी, थैंक्स। वो इनको मुझे ऑन करना है, समझ गया मैं। The wind knows. मर गया का। थोड़ा सा करंट सहजा। और आ गया, ट्यूशन जा रहा था उस वक्त खेलते टाइम हम क्रिकेट। भी एक्टिव हो गया। क्लीन अप द विदरिंग जोन। हाँ विदरिंग जोन को क्लीन तो कर दूंगा, पर वो चीज कहाँ है जिससे क्लियर करता है? उसके लिए मैंने कैरेक्टर भी ले लिया भाई। बहुत ही लोग जेड। कितने बज गए? 8:30 बज गए। खाना वाना खा ले। ये भी हो गया। कहीं पे कुछ तो खुला होगा। Follow the wind. विदरिंग जोन को खत्म करने के लिए कुछ तो कहीं पे खुला होगा। इसे खत्म कैसे करूंगा? हाँ मार दो यार, तुम एक एक मार मार के खा जाओ मुझे। हेल्थ ही मत छोड़ो मेरी। उनमें से इसको लेने से कम हो जाता है नहीं?
चढ़ कहाँ रहा है? ओ सीधा लगे यहाँ पे फेंक दिया मुझे। ओके ब्रो, बाय बाय, लाइक कर दिया है। हाँ हाँ ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। अब ये नहीं जाएगा का? Into the wind. हाउ टू क्लीन द विदरिंग जोन, वो तो तुम दे देते थे छोटे छोटे से, वो मार के हो जाते थे। अब यहाँ पे तो वो दिया ही नहीं है तुम लोगों ने। ऊपर दिया है क्या वो? हाँ दिया है भाई, मैं ऊपर ही नहीं गया। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट, बाय। नहीं नहीं नहीं, ये तो भाई ये है। हाँ दिया है भाई, मुझे देखने तो। I have to see. Wait. अभी मत बोलना कि डेंड्रो कैरेक्टर चाहिए। फिर तो लम्हा हो गया भाई मेरे साथ। मुझे इनके अंदर जाना पड़ेगा शायद से, फिर जाके मुझे कुछ क्लू मिलेगा। हाँ ये देखो, ये कहीं पे इशारा कर रहे हैं जाने के लिए। टूट ही गया मेरा स्क्रॉल बटन, ही टूट गया भाई माउस का। Time to go. अंदर घुस जा। पानी में तैर क्या रहा है इधर? Illusion shattered. The wind knows me. कहाँ मार दिया मैंने? अब क्या?
भाग। मेरे पे तो बेनेट ही नहीं, मैं तो इसे तोड़ देता। ओके, तो यहाँ पे बताया गया है फर्स्ट सेकंड थर्ड। उस तरफ से देखे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, इसको कैसे क्या करना। ओके, मुझे डेंड्रो पता था, ये घुमा फिरा के डेंड्रो को ही पकड़ाएंगे। साला निकाल ही लेना चाहिए था मुझे प्रीमो सेफ करके। भाई मैंने क्यों बर्बाद किया प्रीमो। बक भैंस की आंख। There's still a long road. हाँ ये रहा ना। अब ये 3 भी खोल लेता हूँ यार, कुछ मिल जाएगा। मतलब तुम्हें अनिवार्य है, तुम्हारे पास एक डेंड्रो कैरेक्टर होना ही चाहिए। वो ट्रैवलर क्यों ना हो, तुम्हें बिल्ड ना किए हो कि नहीं वो नहीं पता भाई, रहना चाहिए तुम्हारे कैरेक्टर उसमें। वाह, अरे अरे अरे, गलत सीन कर दिया, सॉरी। Gather. Yeah. Propagate. No touching. अब तो भाई तू सीधा फ्रीज हो जा, पानी है नीचे तो फ्रीज ही होगा अब तो। भाई स्कैम ब्रदर। तो ये देखे जा, डैमेज मत खा तू। अब हमें रिटर्न जाना है यहाँ से, इसे लेके। टान्यू पकड़ ले। हम आए कहाँ से थे, भूल गया मैं। बढ़िया, मैं भूल गया हम कहाँ आए, कहाँ से थे। ऊपर से आई थिंक। और एक पौधा कहाँ पे है। क्या हुआ? शिट भाई, Next on the agenda. दिख रहा है यहाँ से। एफ एफ एफ, फिर टी। ये शायद से उदरिंग जोन में ज्यादा देर नहीं रहते, धीरे धीरे गायब होते हैं ये। मेरे को जल्दी करना पड़ेगा। ओ भाई, ये पीछा कर करके मारते हैं क्या? We're way behind schedule. Next on the agenda. और एक कहाँ पे? पर वो कहाँ है? वहाँ पे मत मारो भाई, मत मारो। क्या बिगाड़ा मैंने तेरा? We're way behind schedule. वो मतलब प्री टारगेट करके मारते हैं ये। वाह बेटे, बड़े तेज हो तुम तो। इसी को करते करते तुम रात बीत जाएगा। नीचे उतर। चढ़ गया अंदर कुछ।
Next on the agenda. Next on the agenda. अबे यार इनका एक टाइमिंग होता है, मेरे को जल्दी करना पड़ेगा, मैं नीचे पीछे गिर जाता हूँ। वो ये टाइमिंग के अंदर ही रहेगा, नहीं तो फिर गायब हो जाता है। बड़ा गंदा सीन है। मेरा थोड़ा स्ट्रीम जल्दी से स्टार्ट करना पड़ेगा, कल सुबह है, जल्दी स्टार्ट करूँगा। Next on the agenda. चढ़ जा। चढ़ जा, घूम घूम मत कर। ये देखो लग गया भाई। ये क्या स्कैम था? दिमाग खराब पहले से ही कर दो तुम। हाँ तुम दिमाग खराब कर लो पहले से ही। नहीं करना मुझे, जाओ मरो जाओ। We're way behind schedule. पहली बात तो टाइमिंग रखते हैं भैंस के अंक, फिर पर से ये लोग सिर दर्द कर देते। ये क्या कर दिया? We're way चढ़ जा जल्दी से, गायब हो जाएगा। देखना कितना भड़वा है भाई। शिट भाई, इसी के अंदर जाके शायद से लाना पड़ेगा मुझे। हाँ यहाँ पे भी है तो है, पर किधर? Next on the agenda. ये रहा। नहीं ये पगला टू क्या? मैं यहीं से तो आया हूँ। यार मैं भूल ही गया हूँ कि मेरे पे ट्रैवलर है। Solidify. There is no escape. जाओ यार, खेल दे रेडन ने। We're way behind schedule. कौन आया रे? कौन आया? Who is this? आजा तू फाइट कर, आजा। This is हाथ order. के पहले फिर Now you झूले। shall perish. मेरे 1.5 सेकंड में खत्म। ज्यादा टाइम नहीं लेते भैया।
सीधा 1.5 सेकंड में खत्म करते काम। Take them. I have no need. नहीं तेरे को देता भी नहीं मैं, अगर तेरे को नीड होती तो। What? Illusion shattered. अबे हट तो भाई, फंसा दिया। क्या दबा दिया? बी दबा दिया। पर से स्पीड को ये लोग तो स्लो कर देते हैं ना, बड़ा दिमाग There is खराब no होता है। escape. यही टाइम में Shine down. Propagate! Illusion shattered. और कोई? Investigate the trees. ऐसा हुआ था। ओ मेरे को ऊपर जाना है, मैं अंदर क्यों जा रहा हूँ? ये ट्रीज के बारे में बात हो रहा है। भूल कैसे जाता हूँ? You seem to have entered someone else's dream. वाह, ये और के ड्रीम में घुसी। और यहाँ पे भगदौड़ मच रहा है। हेलो। There is no escape. और भाई ये क्या था? क्यों लो? खाओ बर्फ के गोले। Solidify. मेरा बिल्ड नहीं है भाई, पर चल रहा है भाई अच्छी तरह से। फिर ऊपर जाना, कहाँ से कैसे जाऊं? दस लाइक कर दो गाइस, 10 लाइक, 10 लाइक्स। इन्वेस्टिगेट कहाँ, क्या है यहाँ भाई? यहाँ पे कौन वेट रखता है बे? चढ़ना पड़ेगा। चढ़ जा, पैसे लगे। चढ़ने नहीं दोगे तो मैं ऊपर कैसे जाऊंगा? बकवास है भाई। यहाँ कहीं पे वो है क्या, शरूम वगैरह? ऐसी के अंदर तो घुसना नहीं है। अरे हाँ, इसी के अंदर ही घुसना था भाई, मैं भी क्या बताऊं। Shine down. Gather.
कहाँ पे हो? आओ एकजुट हो जा। There is no escape. वे कहाँ फंस गई? नीचे मत गिरना भाई प्लीज। पता था मत। Don't do it. Illusion shattered. मर जा। और वो नीचे गिर के मरेंगे। कहाँ था घुसने के लिए? F हाँ। अब कहाँ पे घुसना है? अरे नीचे कहाँ गिर गया भाई? नीचे गिर गई। नीचे नहीं गिरना भाई, ऊपर ही रहती। अंदर कुछ क्या? What's that? क्या कुछ बाहर जाने का रास्ता है? What's that about? हाँ आ जाओ। Access denied. Shine down. Solidify. ये तो भाई बच्चे हैं यार, इनको क्या? फंस न। ओ हो रोड सी बना दी पूरी। तो अंदर जाना है पर ऊपर शायद से कुछ करना भरना पड़ेगा। डेंड्रो का मदद चाहिए होगा इसे हटाने के लिए, लग तो रहा है वो कुछ बड़ा आइटम वगैरह आएंगे। हाँ पता था। उसके बाद टी
to oblivion. क्यों यूज किया मैंने यहाँ पे? I don't know. इसी को मारना था भाई यार, अभी यूज कर दिया। छी भाई। हेलो। Stabilize. क्यूट है यार, मारने का मन नहीं कर रहा तुझे। We're way behind schedule. There is no escape. तुम सब एक जगह में आओ। Order guide you. Shine down. इलेक्ट्रो वाले हैं पर इम्यून नहीं होते। कितना चुद्दू सा है भाई, चन्नू सा मुन्नू सा। विश्वजीत विश्वाल, थैंक्स विश्वजीत विश्वाल फॉर कमिंग। There is no escape. वापस आने के लिए शुक्रिया। खाना वाना खा लिया? यही टाइम के लिए तो मैंने बचा के रखा था। आओ, बीच में छोड़ूंगा ये। और वन दबाओ। क्यों? ओहो, एक गया। चलांज कंप्लीटेड। यस। अब क्या, बाहर निकल जाओ? कोई क्रेट व्रेट नहीं दोगे तुम? ये तो नाइंसाफी है पूरी। पिकअप मिला मुझे, फ्रूट मिला मुझे, वसाना फ्रूट। ओ यहाँ पे है क्या? ये ब्लेंड सा हो जाता है भाई पूरा। ये खत्म। एडा काम मत हो ना पापा। होई काम मत हो। से करते हैं वो बात। सत्यजीत मिश्रा, वेरी नाइस। ओ भाई आप कहाँ से हो? मैं भाई उड़ीसा से हूँ। मैं भाई उड़ीसा से हूँ। आप कहाँ से हो भाई? सत्यजीत का नाम सुना सुना सा लग रहा है। Ah, it's you two. I was just about to go look for you. Huh? Tighnari, what are you doing here? Where's Kale? अच्छा सत्यजीत भाई, गेम का आवाज आ रहा है ना अच्छे से? Kale's condition. To put it simply, she's not well. You mean she's sick? How could she be? Oh, wait a minute. Could it be because of what Paimon did yesterday? No, no need to worry. Something as small as you could never harm her. This sickness is something that Kale has been dealing with for some time.
𝗂𝗓 has been more excited than usual since you two arrived. A little too much so, to be honest. She hasn't remembered to take care of herself. I suppose it's understandable, though. She hasn't been around anyone she considered a friend for some time now. It must have been refreshing for her to have you two here. So, Tighnari, what's really wrong with 𝗂𝗓? Let's take this conversation elsewhere. 𝗂𝗓 just fell asleep after taking her medicine. She needs some peace and quiet. Okay. Follow Tighnari to discuss details elsewhere. Okay. फंस गया. All right, let's continue our conversation here, shall we? To be honest, I hadn't realized that you're that honorary knight from Mondstadt until 𝗂𝗓 told me just now. I've also heard all about your deeds in Liyue and Inazuma. So, just to clarify, what I'm about to tell you about 𝗂𝗓 is not because of who you are or your past feats. Instead, I am going to tell you because... well, because 𝗂𝗓 asked me to. एक मिनट गाइस, मैं थोड़ा फोन चार्ज बिठा लूं. चार्ज खत्म हो रहा है. आ गया मैं. And honestly speaking, I was against 𝗂𝗓 revealing her past to you. But she insisted, saying you two treated her with sincerity and as a friend. So now she wishes to reciprocate the gesture. So, Tighnari, what exactly is wrong with 𝗂𝗓? You said this is something she's been dealing with for some time. Just how serious is it? Right. Ever since she was a child, she's been afflicted with a disease called 𝗟𝗟𝗓𝗓. 𝗟𝗟𝗓𝗓? Yes, it's a disease unique to the lands of Sumeru. It is characterized by dark and hardened scales that form on the body. At first, the afflicted may only feel mild numbness on the affected area of the skin. However, as the disease progresses, one may begin feeling fatigued and even experience peripheral paresthesia. In its final stages, the disease strips a person of the ability to control their own body, and they effectively become completely immobile. That sounds terrifying. Wait, hold on. So when 𝗂𝗓 seemed to be acting a little clumsy earlier, it was because... Correct. That would be the effects of 𝗟𝗟𝗓𝗓, which is precisely why I do not want her carrying or holding anything, lest she ends up hurting herself. With appropriate treatment, the disease can be effectively controlled before it progresses to a more serious stage. However, there is unfortunately still no true cure for 𝗟𝗟𝗓𝗓. Nevertheless, 𝗂𝗓's mother still hoped that there was something out there. She handed 𝗂𝗓... What? The Fatui? Ah, it appears you're already familiar with them. That'll save me some explanation. Anyway, the person who eventually rescued 𝗂𝗓 and brought her to me for care said that she had been given to a harbinger known as the Doctor. I have no idea how this doctor managed to do it, but her case of 𝗟𝗟𝗓𝗓 was completely stable for all the years that 𝗂𝗓 was with them. हार्विंजर जो बड़ा डॉक्टर है, हार्विंजर के बीच में डॉक्टर है वही. 𝗂𝗓 is a resilient individual and always tries to appear cheerful, but her experience with the Fatui has left deep scars. Even now, she can still feel deathly afraid of someone touching her. Oh, Paimon had no idea 𝗂𝗓's been through so much suffering. Oh, by the way, Paimon, 𝗂𝗓 wanted me to tell you that she's sorry for scaring you yesterday.
She also wanted both of you to know that she's sorry for hiding her illness. She doesn't need to apologize. None of this is her fault at all. Well said. I hope you'll get a chance to tell her that in person the next time you see her. 𝗂𝐳 once thought that it would be impossible for her to have any real friendships. I trust that you two will never let my trainee experience such emotional pain again. Don't worry, Tighnari. We'll take good care of her. Well, it's not too serious at this point. She overexerted herself the last couple of days, which is what led to her breakdown this time. As long as she has taken her medicine and gets plenty of rest, she should get better. Though, I must admit that 𝗂𝐳's condition was much more stable when she first arrived here in Gandharvaville. She was interested in the work of the forest rangers the moment she saw us. I could see that she was serious about learning, so I felt compelled to ask her to join us. Her stamina has gotten much worse recently. Though a moderate amount of physical exercise is always necessary, I'm afraid the long-distance patrols are a little too much for her now. All right. Now that I've told you about 𝗂𝐳's past, I think I'll head into the rainforest to find some ingredients needed for her medicine. I'll see you two later. बातचीत बहुत हो गया भाई, चलते हैं. We can come along. Okay, चलो. ढूंढते हैं भाई. All right, but I must warn you two. The rainforest is a dangerous place, especially for someone who's still recovering like the traveler. You must follow closely and listen to every instruction. No problemo. Let's go then. We'll be looking for a plant known as lunar lotus. It's often used to help those afflicted with Elazar recover their energy. है साथ से मेरे को Hey, Tighnari, where exactly are we going to find this plant? लग रहा Lunar है lotus can be found all over the rainforest, but it often grows. मेरे पे है शायद से, मैंने लिया था. Given the name, कैरेक्टर चेंज करने दो भाई पहले तो. मेरा ऐसा सिहर सा जाता है ये कैरेक्टर इस चीज को देख के, मतलब शुद्ध. All right, let's head off. Gonna be epic. You एक are मिनट, correct. Lunar हेल्थ बढ़ा लूं अपनी. The large petals are actually the plant's leaves and sepals, which surround a very small flower. You should note that many... हाँ भाई मिल जाएगा, चिंता मत करो, लग जाता है वो हमको. Take the 𝗂𝗚𝗕𝗚, for example. The plant is not a lotus at all, but rather a vine. And then there's the Sumeru rose, which is not a rose, completely contrary to कड़पलाता को its name. कल्पालाता बोलते हैं. oh, कड़पलाता. okay then. No Tighnari. Yep. There should be lunar lotuses growing somewhere in this area. Let's split up and begin searching. If you could manage to gather 4 of them, that would be sufficient. We'll rendezvous here once you've gathered the needed amount. यही है शायद से. हाँ यही है. ये मेरे पे था, है मेरे पे, ये तो मिला भी है मुझे. All right, we've gathered enough lunar lotuses. Let's head back to meet Tighnari. Hey Tighnari, we found the lotuses you requested. Let me take a look. Good, very good. These are all excellent quality. I'm quite glad you two came along. Your exploration experience helped save me a lot of time here. It seems we even have enough time to stock up on some other things I need. Hey, Tighnari! क्या रे? Oh, Tighnari, someone's calling your name. They're कौन है dressed रे ये? like a forest ranger. Ah yes, that's Amir and the others. But didn't they just set off not too long ago?
What are they doing back so early? Let's go find out what's going on. Tighnari, thank goodness we found you here. We were just about to head back and find you at Gandharvaville. What's going on? We just discovered a withering zone. The withering is back? But the patrol route you were on should have been already clear just a week ago. It reappeared so quickly. Can you tell me the exact location? It's up ahead, deep in the river valley. It's appeared in a spot that blocks nearly the entire narrow part of the valley area, so we decided to come find you as quickly as possible. And the radius of the contamination? Sorry, I couldn't get a clear enough view to tell. No one in our patrol team had a vision, and it appeared to still be spreading, so we didn't risk getting any closer. Okay, I understand. You made the right decision. I'll go deal with it right away. In the meantime, please guide these two back to Gandharvaville. Wait, Tighnari, why don't you let us help you? You two have only just arrived in Sumeru. You're still unfamiliar with many things in these lands. There's a unique type of anomaly that occurs in the Sumeru rainforest. It's called the withering. The affected areas not only cause nearby vegetation to wither, but it's also lethal to wildlife and even people. If you don't carry a vision, then you should think twice before approaching such places. Yes, Amir is absolutely right. I wasn't kidding when I said the rainforest is a dangerous place. As Amir said, विजन लेके तिनियारी तो कमजोर होगा ट्रैवलर के सामने बहुत. ट्रैवलर तो भाई एलियन वगैरह जैसा है. That's right. इसका क्या होगा? If any of the forest rangers without a vision come across a withering zone, we first make a record of the location and then have a ranger with the proper abilities deal with it, like Tighnari here. Only someone with a vision can venture within a withering zone and find a way to deal with it. But you don't seem to carry a vision. Don't worry, she may not have a vision, but she's a real pro at using the power of the elements. Don't sweat it. We've helped others deal with similar situations before. Wait, you've met other forest rangers before? I was planning to properly show you both how to identify the withering before you left Gandharvaville. Really? Anyway, since you two are experienced adventurers, come with me. I'm sure you'll both be able to help. चलो. Illusion shattered. One with nature. Hey, look! That gloomy area over there looks like a withering zone. Even though Paimon's seen one before, it's still kind of scary. All right, Traveler. We're about to enter the withering zone. Since you already have experience dealing with these things, you should already know what to do. Guys, stream तुम देखते रहो. मैं थोड़ा सा टॉयलेट आया. Okay?
ମୁଁ ରଜ ତ ଘରେ ଯାଇକି ରହିକି ଆଇଲି ତାକୁ ଏଡେ ଜୋରେ ଥଣ୍ଡା ଧରିଛି ମତେ ଡେଇଲା ବାପାଠୁ ଡେଇଥିବ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ହେଲାଣି ବୋଉକୁ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ But please remember, don't push yourself. If at any point it becomes too much, return outside the zone and take a breather. It could become a matter of life and death. You ready then? कुछ नहीं होगा टिनेरी को दे दो सिर्फ मैं भेजे इतना बार वो नहीं कर सकता चेंज नहीं कर सकता गाने ऊपर First, we must locate any branches sustaining the withering zone. यार इतना इतना गेम ये गेम बेकार है ना भाई फिर से गाने पे स्विच कर Time to begin work? कहाँ पे पार एम लग जा Great work. Now that all the branches have been cleared, we'll need to take care of the tumor. चला खांसी होने लग गई मेरी लैग कैसा था भाई ये Let's light it up! There is no escape! Born of ice and frost. Shine down. There is no escape. No touching. Now, destroy the tumors of the withering. कितना हरा भरा हो जाता है भाई इसे खत्म करने के बाद We did it! Everything's returning to normal now. Yes, thanks to you two. We were able to quickly restore this area back to normal. Tighnari? You make it sound like we did well, but why does Paimon have the feeling you're worried about something? It's that obvious, huh? Alright, it's like this. Recently, the rate at which the withering zone appears has been increasing. Even though we were able to quickly clear that withering zone, it won't be long before another one appears. If that simply meant more work for me, then that wouldn't be an issue. But it's far more severe than that. The withering is leaving lasting effects on the rainforest itself. For instance, even though we cleared out the withering zone, many of the plants that were affected will not recover. This presents a crisis for the ecosystem itself. Many plants in the rainforest are already in decline, directly impacting the wildlife that depends on those plants. And most disturbingly, as the appearances of withering zones have started to increase, Kale's case of Elazar has also become more serious. Huh? Well, why is that? I'm still not sure of the exact reason. However, I've received word from acquaintances at the academia that similar cases are being reported for patients with other conditions. No, none that we know of. The withering has been recorded in Sumeru for millennia,
It's said that it originates from the depths of the world. By the way, have you heard of Irminsul before? Irminsul is a tree located deep beneath the surface. Although it isn't like any tree we know in a biological sense, you can basically think of it as a large tree that grows downwards rather than upwards. I'm sure you've heard of ley lines, right? They're like the roots of Irminsul, spreading and extending from a massive cavern deep underground all the way up to the surface. ओहो, समझ गया. सोच क्या रहा है? समझ तो गया. Ley lines continually absorb the memories of this world, which are then funneled into Irminsul, allowing it to collect knowledge and wisdom from ancient times to present day. The Dendro Archon is known as the God of Wisdom because her consciousness is directly connected to it. It is also said that the Dendro Archon's power is a manifestation of Irminsul. And as for the Withering, its emergence is related to a disease that's affecting it. That's right. My ancestors learned of this from Greater Lord Rukkhadevata's familiars a long time ago. But even those mysterious creatures did not know of a cure for Irminsul. I'm afraid we Rangers will be battling the Withering Zones here for a long time until a cure is found. Alright, that's enough on this topic for the time being. Now that we've taken care of things here, it's time for us to head back to Gandharvaville. Okay. सही बोला. लौट के चलते हैं. मैं थोड़ा आईपैड को चार्ज बिठा लूं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा. कोई नहीं, लाओ कर दो भाई, ये मत खुल जा. चार्जिंग होता है. गानियों को रहने देता हूँ, कभी कभार काम आएगी. आर्टिफैक्ट नहीं है ना गानियों का, वही दिक्कत है. आर्टिफैक्ट चेंज कर दूं क्या? नूब हूँ भाई, मैं आर्टिफैक्ट ही नहीं रखता पास में. मैंने 90 कर रखा गानियों को, वेपन भी दे रखा है उसका. ये क्या दे रखा है? नहीं वो डैमेज बोनस. चला यही दे देता हूँ. वर्डेंट वैनक्विशर, इसका कुछ तो काम आएगा. ट्रोल बिल्ड भाई, ट्रोल बिल्ड. वर्डेंट वैनक्विशर दे रहा हूँ, वो भी गानियों को. ओ भाई, ट्रोल बिल्ड भाई मेरा. पंछी बना उड़ता फिरा मस्त गगन में. Oh, Tighnari, you all made it back. How did it go? The Withering Zone you reported has been taken care of. No need to worry. Huh. Wait, is that? क्या? Oh no, Hypatia! और पाइमन घुस गया उसके मुंह के अंदर जाके भाई. उसके मुंह के अंदर घुस गया पाइमन. Dustbird is Hypatia's designated courier for urgent news. You do remember her, don't you? She's the scholar you and Paimon were following when you first arrived in Sumeru. Oh, her? How could we forget? So did something happen? Let me see what's written in the letter first. Oh. So what's it say? And what's with that weird expression on your face? Just let Paimon read it. Huh? All Paimon sees are 3 squiggly lines. Yes, allow me to explain. After we brought you from Hypatia's cave to Gandharvaville,
Hypatia resumed her meditation. She must have just finished. It's been nearly 3 days since she's had anything to eat, and it appears she's forgotten to prepare some rations. This letter is her asking us for help. We need to go. What? You mean she's been sitting there for 3 days? Hey, wait, how did you know all that from just a few lines on the paper? Well, obviously because this has happened before. Last time she drew 5 lines, and by the time we found her... Well, I'd prefer not to remember that. Needless to say, Hypatia's been through worse, but we should still get to her as quickly as possible. I've got some emergency rations set aside for times like these. Paimon, Traveler, could you two bring these to her? Wait, you want us to bring her the rations? But will the Traveler be okay if her cave is still filled with that funny incense? Let's find out. Here, Traveler, take a smell and see. So, how do you feel? Huh? Really? You're not feeling even a little drowsy? But wait, how'd you know that she'd be okay this time, Tighnari? Back when we were clearing the withering zone, I observed that she could adeptly manipulate the Dendro element. I knew then that she would be fine. And if I may ask, when I was telling you two about 𝗟𝗏𝗠𝗠𝗠𝗠's ley lines, was what I described similar at all to what you saw while you were unconscious? That's correct. Those weren't hallucinations at all. Though I don't intend to apologize for deceiving you. Because what you saw is of significant importance. Not just for the nation of Sumeru, but the entire world of Teyvat. My forefathers were shown much favor by Greater Lord Rukkhadevata. We took an oath to protect this nation together with her. Now that that duty has fallen to me, it was part of my responsibilities to ascertain whether you could be entrusted with the fate of Sumeru. Now, after seeing you in action with my own eyes, you have earned my confidence, and I no longer feel the need to hide any secrets from you. When you passed out, your consciousness had connected directly with 𝗟𝗏𝗠𝗠𝗠. What you witnessed were actually real memories contained within 𝗟𝗏𝗠𝗠𝗠 itself. Oh, I could try to tell you more, but it would be better if you went to ask Hypatia instead. Her focus on meditation and use of spirit borneol are aimed at establishing a connection with 𝗟𝗏𝗠𝗠𝗠, just as you did. That sounds nice and all, but will she really help us? Seriously, she completely ignored us the last time we tried talking to her. That was because when you ran into her, she was in a special phase of her training. During that time, she must avoid communicating with others. Please, wait here for a moment. वाह भाई सही है ट्रेनिंग में हो तो किसी से बात ही मत करो ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने ये भैंस की आंख ये क्या अफ्रीका का एक चिड़िया की तरह नहीं दिखता बड़ा चोंचो वाला उसका नाम भूल गया मैं डोडो बोलते हैं शायद से उसे Here, take these. It's a meal I packed for Hypatia, as well as some other ingredients. I'm sure it'll come in handy. Also, here's a letter that I would like you to give to her. Just show it to her and she'll answer any questions you may have. Thank you. No. I should be the one thanking you. You've both been a great help these last few days. Hypatia should still be in the cave. Let's go inside and see how she's doing. Okay. Let's go. Hypatia should still be in the cave. Let's go inside and see how she's doing. हाँ हाँ 2 बार क्यों बोल रहा है 1 बार तो बोल लिया Hello? Hypatia? Hey, there's nobody here. Maybe she went out to look for some food. Let's try looking around the area. अभी देखना है फाइट वगैरह दे चैट क्या बात है ओ मर गया क्या
तो ये और इनका क्वेस्ट तो मैं भाई खत्म कर चुका हूँ। क्या There you are! Hypatia, are you alright? So hungry. There's no way we can get her to eat in her current condition. Let's try finding some water first. Huh? Wait. Why does it look super foggy outside all of a sudden? Anyway, let's go look around. हाँ भाई, लुक अराउंड करो, फिर बाद में मॉन्स्टर से फाइट करोगे। यही तो होता है इस Huh? How things out here end up looking like this? What happened? And where are we? कहाँ गया ये? Really? Oh, maybe you're right. Let's go investigate the area. प्यारा बना रखा है भाई, देख रहे हो? Wow, this place is huge. Paimon knew there's something off about that cave. Let's think of a way to get over there and have a closer look. Who knows? Maybe we'll find a lead of some kind. हाँ हाँ पता है मुझे, कूद चुका हूँ। चलो भैया ऊपर लेके चलो। नहीं नहीं नहीं, अरे शिट भाई, कैच नहीं कर पाएगा। छी भाई, ओ इसे वो कैच भी नहीं करता। नहीं यार, मैं भी क्या गंदे काम करता हूँ भाई। कहाँ जाता है? आया मैं इसी रूट से तो फंस। क्या मस्त बना रखा। ओ भाई ये कहाँ गया मैं? डायमेंशन। इनाजुमा में आ गया मैं सही में। What happened just now? Why'd everything around us suddenly change? इनाजुमा में क्या कर रहा हूँ मैं? वाह, फिर से चेंज हो गया। डोर ऑफ रिसरेक्शन, फाइट होगा शायद से। फिर से ऊपर जाना। नहीं होगा।
कूद जा, इसके ऊपर चढ़ जा। मैंने लगा मैं यहाँ पे आया हूँ, पर नहीं, यहाँ पे नहीं आया था। हंस मत, पता था मुझे। Solidify. Illusion shattered. Next on the agenda, born of ice and frost. मर गया। Gather. I will have order. Torn to oblivion. चले ये लैंड दो, इनको तोड़ो। क्या रेडिश? नीचे एक बक्सा रह गया यार, नीचे बक्सा रह गया भैया जी। कहाँ लेके जा रहे हो? बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, बटर। ओहो, कहाँ लेके आ गया ये मुझे? अरे आगे जाना कोई। हाँ बढ़िया लग रहा है भाई। हाँ ऊपर, हाँ मुझे ऊपर जाना है। କରୁନାହାନ୍ତି ନୁହଁ, ତାକୁ କୋଉଠୁ ତୁରନ୍ତ ସର୍କୁଲାର କରିବି। ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ चढ़ जा। अरे यार, डोमेन लिवो। उफ, कुछ करना वरना है क्या मुझे यहाँ? मुझे वही लग रहा, मैं वहां से तो जा नहीं पा रहा। जाऊ जाऊ 113 ର ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ ଫିଟିଂ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ। अब कहाँ है? ते जोर कहीं कथा हो बाबा ते दी बहु जा तमे से यार, जोर गपियो भी कान खराब कर दो। फिर से कहाँ इंटर डायमेंशन में फेंक देते हैं यार, गैलेक्सी में घुमा देते हैं भाई फिर से। What in Tibet is going on here? This place is getting weirder by the minute. Hey, what's the matter? You don't look so good. क्या इन्वेस्टिगेट करूं यहाँ पे? हाँ, क्या इन्वेस्टिगेट करूं? रख रखा है क्या यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए? The courtyard far down the corridor. ओहो हो, हाँ मिलाना है इसे। ओ पूरा पिक्चर बन गया ये। उसके बाद ये खुल जाएगा। हाँ पजल भाई तुम दो यार।
कुछ ना कर सकते तो पजल ही दे दो। वहां से खड़ा होकर मिला रहा था, वहां पॉइंट दिखा रहा था। फिर से कुछ गलत सेल दिखा। अरे अभी सर लेक्टर साला अभी जरूर एथर को रख रखा होगा इसने। एथर मार डालूंगा तुझे, सही में बोल रहा हूँ। इसका आवाज बड़ा दिमाग खराब करता है यार मेरा। अरे यार क्रम्बल कुछ ना करना था। Stabilize. Access denied. बेनेट Glaze over. No touching. मेरा तो गानियों का डैमेज ही नहीं है। अरे अरे मार देगा ये तो। Solidify. चढ़ गया मैं। Shine down. जब भी फाइट करता हूँ ऊपर चढ़ जाता है भाई। ओमो द हैकर है क्या? हाँ भाई मैं हैकर हूँ। There is no escape. और इसका शील्ड लग जाएगा। मेरा पिंग जा रहा है। Stabilize. Shine down. क्यों भाई रुकना एक जगह यार, तू मार ले यार। हाँ हकूर। बीट क्या मार देता अगर तुम ये कट सीन नहीं देते तो खत्म कर देता इसका कैरियर। कट सीन देके क्यों हरा नहीं पा रहे बोल रहे यार। देख रहे हो बंदों को 10 HP छोड़ा था, इसका शील्ड में तोड़ देता। साला अरे हितेश ही है तू। हितेश को जानता, तेरा नाम नहीं जानता मैं। हाँ हितेश तेरा नाम नहीं जानता मैं, पूरा नाम। हाँ इतने दिन से खेल रहा है मेरे साथ, तू बीच पबजी खेलता था। हाँ रवि रमावत। जतिन का नाम क्या है? जतिन का नाम क्या था पूरा नाम? भूल गया मैं। उसका नाम भी रमावत से है। हितेश कौन है? पर हितेश को नहीं जानता मैं। वही बंदा है ना जो लड़कियां उसके पीछे मरती हैं गेम में। सिर्फ फ्रेंड लिस्ट में लड़कियां ही भर रखे होंगे उसने। वही है ना? जब भी बुलाओ लड़कियां आती रहती हैं। हितेश हमारा प्ले बॉय है बीजेएमआई का। यार गायब क्यों हो गया यार? कायर है क्या? लड़ना मेरे से। साला गायब हो गया। पिछली बार भी गायब हुआ था, इस बार भी हो गया गायब। कुत्ता साला। ये जतिन निमावत। हाँ हाँ पबजी का रोमियो, सही बोला। और खेल रहे हो पबजी? मेरा तो आईडी बैन हो गया यार। खुल भी गया, मैं खेल ही नहीं रहा। मेरे को बोरिंग लगने लग गया। अब कौन जो ब्रो जैसे फिर से कौन कर कुछ करेगा? So sweet. बीजीएमआई के गलती के वजह से मेरा अकाउंट बैन हो गया। बाद में बेंच बोलते हैं कि हमारे गलती की वजह से आपका अकाउंट बैन हुआ था, हम अनबैन कर देते हैं।
मैं बोला हाँ भाई कर दो यार, मैंने इतना रैंक पुश किया था स्क्वाड में, टॉप 100 में आया था, वो तो गया ना मेरा। बोले वो हम कुछ नहीं कर सकते। वाह। Are you okay? That's really not अब मैं कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहा हूँ, उसी में उसमें भी मेरा बहुत सारे अच्छे से स्किन्स वगैरह है, वही खेल। बीजे में मर जाओ, बीजे में तो बैन भी हो गया। बहुत सारे बंदों का अकाउंट बैन हुआ है, पता है, जो लेजिट बंदे हैं उनका भी बैन हुआ है। और रिपोर्ट मार देते हैं ना बंदे तो बैन कर देता है बीजे। और हितेश भाई खाना वाना हो गया सब? खत्म सब? Who's there? Tighnari, is that you? अरे रिपोर्ट मार दिया मेरे को बंदों ने। मेरा कितना 8 का केडी था ना, 3000 कितना किल किया कर दिया था मैंने, कितना 600-700 मैच में। मेरा आईडी सर्च करके देखना अगर तेरे पे बीजेएमआई पड़ा होगा तो। मैंने कितना 700-800 मैच में कितना किल कर लिया था, 8000-9000, 8 का केडी था मेरा। कॉन्करर लग गया था मेरा, पता है, सिर्फ फ्रेम के लिए खेल रहा था और मैं बैन हूँ। रिपोर्ट की वजह से हुआ। मैं अनबैन भी हो गया हूँ, मेरा आईडी खोल के देखना, बैन का साइन वगैरह नहीं आएगा। अनबैन भी हो गया हूँ पर मैं खेल नहीं रहा, मेरे को मतलब मन उठ गया। बीजेएमआई ऐसे ही बैन करता रहेगा तो क्यों खेलूंगा। Actually, we didn't bring the fruit. It was already here when we arrived. We were kind of wondering about that actually. मेरे बैन होने के 1 वीक के बाद मेरा एक दोस्त का भी हो गया बैन, वो मेरे घर के पास ही रहता है। लेजिट बंदा, आईफोन में खेलता है फिर भी बैन कर। बीजीएमआई का दिक्कत है भाई। बंदों को बैन करता था, बंदों को बैन करता था ना भाई, खुद ही बैन हो गया। गेम का कुछ मेंटेनेंस ही नहीं था, सिक्योरिटी वगैरह को अपडेट नहीं करते, कुछ ना करते भाई ये लोग। हाँ, अरे डाउनलोड मत करना, और कुछ खेलना हितेश, तू और कुछ खेल, सीओडी वगैरह खेल, नहीं तो एपेक्स लेजेंड खेल, बहुत सारे ऑप्शन है भाई। बीजीएमआई थोड़ी जान था। नए गेम ट्राई करने का आ गया टाइम। Too crazy to believe? No, I actually do believe what the traveler is saying. I myself had a similar experience once before and ended up scaring my timid little जतिन तो मेरे साथ बीच में फोर्टनाइट खेल रहा था, पबजी पीसी खेल रहा था। They only dragged you into the dream because they तो hoped to buy themselves हॉस्टल चला गया ना in order to scurry away. So, Hypatia, just what kind of creature is your neighbor exactly? I'm not sure what it's called, to be honest. अच्छा हितेश, गेम का आवाज मेरा आवाज को तो नहीं दबा रहा ना? Connection with the Dendro Archon. नहीं यार, काम वाम में लगा रहता हूँ। हाँ वही तो, मैं भी कॉलेज वगैरह जाता हूँ, मेरा भी टाइम नहीं मिलता। मैं रात को आता हूँ 5 बजे, थोड़ा क्रिकेट वगैरह खेल लेता हूँ फील्ड में जाके, फिर आके स्ट्रीम करता हूँ। मेरा गेम का जो बात कर रहे हूँ, वो बात मेरा आवाज को नहीं तो दबा रहा ना, बात का आवाज कम है मेरे से। In my curiosity, I began to walk over to the creature. They must have already been used to me living in the cave, because they didn't seem to mind me approaching them. They just kept doing whatever they were up to. It wasn't until I crouched down next to them that they suddenly realized that I could see them. Oh! And then? And then I had a dream. By the time I came to, they were nowhere to be seen. क्या हो गया? नहीं, आवाज नहीं आ रहा मेरा अच्छे से। But sure enough, I saw them nearby a few days later, and they weren't alone. I feel like they aren't as afraid of me as the first time I approached them. थैंक यू यार, मैं जितने भी बंदे आ रहे हैं ना उनको पूछ रहा हूँ, भाई कोई बता दो आवाज वगैरह सही आ रहा है कि नहीं, क्या कोई कुछ ना बोलता। लैपटॉप के पास जाते मैं नए नए गेम्स ट्राई करूंगा, देखने आना तू। तुम्हारा काम वगैरह रहा होगा इसलिए तो नहीं आ पाया। यार इसको भूख लग रहा है और मुझे भी भूख लग रहा है। Sounds like just drinking juice still isn't quite enough for my stomach. Well, एकदम कड़क। ओ भाई। dropped the food earlier. Anyway, looks like we'll need to prepare something. चलो एक डैब मार देता हूँ। Besides, Paimon's कड़क है तो। hungry too. Let's eat first and talk about 𝗟𝗏𝗠𝗠𝗘 later. All right, Dab. we're up, traveler. Today's menu will
creature, sweet madame, and a radish veggie soup. Dab You'll मार love दिया them, मुझे। Hypatia. They're our specialties after all. Sounds good. I've never tried any dishes from other nations before. I certainly look forward to it. It's been so long since I've had a decent meal, too. To be honest, the last time had to be when Tighnari came to visit. Make some food. Fire by outside. जो खाना लाए थे इसने फेंक दिया क्या? All done. Let's use the empty box that Tighnari gave us since we already watched it. Oh, it smells amazing. And the box is a nice touch too. Let's go serve this up and start eating with Hypatia. पता है क्या हितेश भाई, मैं आईपैड को चार्ज में लगा रखा था, इधर स्ट्रीम देख रहा हूँ, इतना देर हो गया कि आईपैड भी हैंग मारने लग गया, लैग मारने। भाई अटक गया भाई जो सब कुछ यहाँ पे। अटक गया भाई, कट करके फिर से करना पड़ेगा सब कुछ। अटक गया पूरा। अभी चैट नहीं पढ़ पाऊंगा भाई इसके वजह से। हाँ ठीक है। अब ठीक है। नाइट बोर्ड वगैरह काम तो कर रहे हैं ना, कर रहे हैं भाई, और क्यों ना करेंगे। स्ट्रीम में है ना, अभी नाइट बोर्ड आया था। ये रहा। डैब डैब। अब क्या करूं कि उसको खाना भी देना पड़ेगा। नौकर बना के रख दिया भाई। पहले वो देखूंगा वहाँ क्या चमक रहा है, चमकीला चीज है। मैं एक बात बताओ, इतनी कोपचे में कौन वीड छुपाता है लाके? Are you already finished cooking? Smells delectable. I'm truly thankful whenever I can enjoy a proper meal like this. Cooking really isn't my forte. Even though everything you mentioned was in Tighnari's letter, it's still hard to believe you were able to connect with 𝗏𝗏𝗠𝗠 immediately after smelling spirit-born eel for the first time. It took me nearly 3 years before I could do so. And everyone at the academia even lauded me as a genius. You should know that some researchers spent their entire lives without ever successfully connecting with 𝗏𝗏𝗠𝗠 as you have. So why does this incense allow people to connect to 𝗏𝗏𝗠𝗠𝗠? The ingredients used to make spirit-born eel primarily consist of plants created by Greater Lord 𝗏𝗏𝗠𝗏𝗏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 
Archon's power. Since the root of the Dendro Archon's power lies within 𝗟𝗏𝗠𝗠, we can occasionally tap into her powers to peer into the depths of the earth. Okay, I think Naturally, anyone who can establish a connection with 𝗟𝗏𝗠𝗠 in their first ever attempt must be a person of great understanding. Makes sense. But Paimon's got a question. Why was she sensitive to the smell of those plants for such a long time? That was primarily due to her body's unique constitution. Stimulated by the incense, she could perceive the Dendro Archon's power and experience the sensory overload, hence the adverse reactions. Taking in any scent similar to the ingredients of Spiritborn Ale would cause adverse effects. Not to worry though, it appears you've already fully recovered. Technically, your body should still be sensitive to the powers of the Dendro Archon,
But unless you're using intentional meditation techniques, the scent of spirit-born ale should no longer trigger such reactions. Whew. Well, that's a relief. I must admit, I am quite envious of your abilities. Even if it meant suffering from pounding headaches for the rest of my life, I'd consider it worthwhile so long as I could connect with Irminsul at will. Whoa, you're really serious about this whole thing, aren't you? I am a researcher after all. As a member of the 𝗟𝗏𝗧 Darshan at the Academia, my main area of research is the stars and their connection to the fate of living beings. But there is still so much we don't know, especially regarding the mysteries that lie in the starry skies. Which is why I must turn to the all-knowing Irminsul for answers. If only my perception wasn't so limited. Unfortunately, I cannot guarantee that my every attempt to attune with Irminsul will be successful, or that doing so will leave my consciousness intact. I am currently in the stage of training known as Satyavada life. Many researchers in Sumeru have lost their minds while seeking to attune with Irminsul during this stage. Sages have said that Irminsul contains divine knowledge, and touching such knowledge without the proper preparations and abilities will only lead to one's mind caving in on itself. That's why we meditate alone. We need to ensure that our minds will be calm while minimizing the possibility of involving anyone else. Wow. So knowledge from Irminsul can be super dangerous. Aren't you afraid of the risks, 𝗟𝗏𝗘? Of course I do. Especially during nights that are pitch black with no moonlight, and dead silent without even the sound of insects. However, I've been feeling better as of late. I don't get as scared anymore knowing that I have a little neighbor living nearby. I believe that being able to see them is a sort of blessing from the Dendro ARCHON. But what's strangest of all is that they're clearly an envoy of the god of wisdom herself. And they have the curious power to make people dream. What's so strange about that? It doesn't sound इसने वो गैजेट नहीं पहन रखा शायद से या पहन रखा है इसलिए सो जाता है. It's strange because nearly nobody in Sumeru can ever dream. हाँ अभी आएगा. Is that true? Yes, well, to an extent. Only children can dream in Sumeru. Adults, however, never do. The sages say that wisdom implies rationality, but that which occurs in dreams is often neither rational nor logical. Yes, if one struggles with anxieties, those emotions could influence their dreams. The fact that the people of Sumeru do not have dreams is seen as a blessing by the sages. They believe that Greater Lord Rukkhadevata, the god of wisdom, is keeping us away from the foolish delusions you encounter in your sleep. I was born into a family of scholars in Sumeru City. Ever since I was a child, my parents would always tell me that I'll know I've grown up once I stop dreaming. I studied hard, enrolled as a student in the academia, and went on to become a researcher. Sure enough, I never dreamed again. But then, on the day I scared the little Aranara, I suddenly saw a dream again. It was incredible. Aranara. I don't exactly remember what I saw. Aranara. I clearly recall the feeling. I suddenly felt like I was a child again. Back then, I was foolish and ignorant as any youth would be, but I was free of fear. Maybe dreaming isn't as bad as we've made it out to be. Just be sure not to speak of this if you travel to Sumeru City. They'll look at you as if you've lost your mind. So, do you have any thoughts about the things she saw when she connected with Irminsul? Sorry, I'm afraid I don't have any answers as of now. All I can say is that what you saw is a memory contained within Irminsul itself. World forget me. What could that possibly mean? If only I could ascend past Satyavada life and begin Paripurna life. I might have some more answers for you. सत्यवादी जीवन परिपूर्ण जीवन. If you are ever in the area again, भाई please be sure to come and see me. संस्कृत को खींच लिया भाई जॉनसन ने इस बार तो. There's no need to be thanking me. You two are my saviors. Besides, I'm already looking forward to tasting some more of your cooking. वाह
साला नौकर बना के रख दे भाई, कुकिंग टेस्ट करेगा। Now that we know Hypatia is alright and had the chance to ask her some questions, Paimon thinks it's about time to head back to Gandharvaville. गंधर्व विलेज। गंधर्व ऐसे सुनने में बड़ा गंदा सा लगता है, गंधर्व विलेज अच्छा लगता है कानों को। जब हमको पता है ना गंधर्व नहीं है, उसका नाम गंधर्व है। सत्यवादी जीवन और परिपूर्ण जीवन। वो मोबाइल टा को स्विच ऑफ ହେଇଗଲା। चार्ज बा थिला 100%। केते अछि? अच्छा चार्ज टा कमी जीवन के डिस्प्ले चलिले 100 रु 97 ହେଇଛି ହବ। ତମେ ବସେଇ ଯାଇଥିଲ ତ କହୁଛ ନା। Think about it, Tighnari. Refusing to join is tantamount to burying your head in the sand. I understand that you're a forest watcher and that it's your duty to combat the effects of withering zones. But isn't it evident that such work is not a lasting solution to the problem? As 𝗟𝗓𝗏𝗕 clearly stated, your presence and guidance in Sumeru City is pivotal in finding a cure for Urban. नाम ही गुलाम है, रिसर्चर गुलाम। Keep your emotions in check, Gulam. Let's at least listen to Tighnari's reason for declining. We're here to invite him to the academia, not to cause नाम में इसका गुलाम है भाई, गुलाम। 𝗟𝗓𝗏𝗕, I am truly honored that you came here in person, but I'm afraid I must still decline your invitation. I am merely a forest watcher. How could the great minds of the 𝗟𝗏𝗏𝗕 have any need of someone like me? Well, it turns out that your refusal letter had some implications on your master's reputation. He is a renowned sage of the Immorta, after all. So now I've come here in his stead. I see. Huh. And I figured that given his temper, he would come here and berate me personally. Tighnari, your master is an integral part of this effort, and now he requires your assistance. And what exactly does my master need of me, 𝗟𝗓𝗏𝗕? Yeah, master ki. You'll know once you've arrived in Sumeru City, that is. And how long will I be required to stay? There's no definite answer as of now. Do you mean to tell me that despite coming all the way here to Gandharvaville, you still can't answer the questions I laid out in the letter to my master? If that's the case, then I'm afraid I cannot give you a definite answer either. Tighnari, but you... So be it. Come, Gulam, we're leaving. गुलाम, we are leaving. गुलाम साला गुलाम ही करते रहे वो बुड्ढे का। गुलाम सा वैसे देखेगा। आई को आई कांटेक्ट होगा अभी, बाद में कुछ गड़बड़ी होने वाला है बुड्ढे के साथ हमारा। पता चल गया अभी से मुझे। What was that all about? It's nothing. Some people from the academia wanted me to go to Sumeru City to assist them with a project, but I had to refuse on account of all my responsibilities here. But all that can wait. How did things go with Hypatia? It was quite the eventful trip, but the main thing is that she's safe and sound. She answered a bunch of questions for us too. Very good. Now that the traveler has made a full recovery, there shouldn't be any reason for you to tarry here longer. I assume you will be heading to Sumeru City, correct? That's right. We want to meet Lesser Lord Kusanali and ask her for advice. Do you have any idea on how we can find her? Sorry, I'm afraid I don't have any advice for you there. हाँ, जानता है सब कुछ, बोलना नहीं है इसको, डर लगता है डेंड्रो आर्कॉन से। खा जाएगा तुम्हें ये डेंड्रो आर्कॉन नहीं। Let me think. My trips to Sumeru City have been fairly short, and most of my acquaintances are researchers. How about this? I'll write you a letter of introduction that you can give to a researcher I know. He's from the Immorta Darshan and is adept at gathering information. Asking him might prove worthwhile. Also, when you enter Sumeru City, you'll probably end up receiving something like this item here. I'm not sure if it will ever come in handy for you, but maybe you can give it a try. Oh? What is it?
It's called an Akasha terminal. It's a tool produced by the academia that utilizes the Akasha legacy of terminal. Greater Lord 𝗟𝗏𝗕𝗏. Some say that this very item Akasha is the terminal basis ta of lagi Sumeru's china ya reputation as sangere the city Dendro of ARCHON wisdom. sangere zu nai Needless to say, dream this no dekhe device bhai and its sata usage fall under the academia's expertise. So I'll sera leave nopi it to dele them Sumeru to show sitter you how thori to debe use it. jatu Archon quest Next rati up, Sumeru City! Oh, but wait, before that... we need to say Kole goodbye. Okay. That's right! Tighnari, we have something important to say to Kale before we leave. Is she doing better now? Yes, she's doing much better. After being confined to her bed all this time, I thought a little walk would do her some good. Last I saw her, she was taking the path towards the North Crossing. She knew you two would be leaving soon, so she must have wanted to see you off. Thanks, Tighnari. All right, let's go! Farewell, and good luck to you both. Nice. सही हुआ मैंने सब खोल खाल दिया है वो टेलीपोर्टर वगैरह तो मेरे को दिक्कत ना होगा अभी अटैक से टेलीपोर्ट I've been waiting for you two. क्या वाला वाला कर Never रहा है mind. I guess I should just wish you two a safe and successful journey. Thanks for waiting here just to see us off, Kale. We're headed to Sumeru City. Please take care of yourself. Don't worry about me. I can take care of myself. My condition won't be getting in the way of my duties. I want कुत्ता to be अपना a पूछ forest हिला ranger रहा है after all. It's up to me and the others to protect the rainforest here. And, I'm sorry. फिर से भाई ये भूल के डॉक्टर ने तेरे को कुछ पिला दिया है क्या भूलने की दवा I just wanted you to भूल treat जाता me है as a बात normal बीच बीच में friend, not some girl that needs your sympathy. But I guess now I understand that OBS में इतना दिक्कत था भाई मैं शायद से लैपटॉप लेना 2-3 महीने से स्ट्रीम नहीं कर पा रहा था लग के भाई कल क्लच टीओपी गेमिंग भाई ने मेरा मदद किया इसीलिए आज मैं 2 घंटे के लिए स्ट्रीम कर पा रहा हूँ We're probably still gonna worry about your condition, but that's because we're friends and we care about भगवान you. क्लच टी भाई का भला करे Thank you. That means a lot. Before you leave, I have something for you. Oh? क्या कुछ देगा क्या ड्रेस व्रेस देगा कुछ नहीं 50,000 मेरे को लग रहा था 50,000 प्रीमो जेम्स दे देगा अभी कहीं से हैक वैक लगा के Thanks, Kale. Now we can eat the scrumptious Kali. pitas whenever and Karela. wherever we like. I hope Kali. that whenever you eat them, you'll both remember your time here in Gandharvaville. गंधारवाविल गंधारवा बोलना बंद बहुत क्रिंजी लगता है सुन Please visit Gandharvaville again. फिर से गंधार We'll always be ready to assist you. गंधारवाविल अब दिस शिट कुछ मिला यार Let's go Sumeru City. अब ये सिटी में घुसेंगे तो कुछ तो दिक्कत होगा ही पता है मुझे अच्छा मेरा ग्राफिक्स लो हो गए क्या देखते हैं थोड़ा लग रहा है ऐसा लो होता गाइस माफ करना मेरा स्क्रॉल का बटन खराब हो गया दाब दिया मैंने अभी जोर से वो टूट गया ठीक है कितना प्रीमो हुआ मेरे पे बहुत सारे तो मैंने कर दिए 300 जोंगली का स्पिन मारता हूँ क्या लगता है गाइस जोंगली मिलेगा मुझे नहीं जोंगली नहीं तिनहरी का मारू क्या यार तिनहरी काम आता है यार नहीं यार जोंगली शिवन हो जाएगा यार 5 स्टार थे तो यार स्ट्रीमर लक काम नहीं आ रहा क्या मेरा स्ट्रीमर लक ना 0 हो गया भाई पूरा All the world holds dear is but a backdrop of constant motion. जोंगली तू चल यार
गो टू सुमेरु सिटी। अच्छा मैंने सिटी का टेलीपोर्ट वे पॉइंट वगैरह खोल दिया था, नहीं तो अभी भागते कहाँ तक आना पड़ता मुझे बेकार। बच्चे खेल रहे हैं भाई, खेलना तो कैसे बात कर। हाँ हाँ वही। It appears this is your first time visiting Sumeru City. Oh, yeah, that's right. But how did you know that? Because there's currently no information on either of you in the Akasha. But Oh, no need to Akasha worry, that won't terminal. prevent you from entering the Here. city. In fact, the Academia conveniently provides each traveler to Sumeru City with a device. Perhaps you too have heard of the Akasha before. It's our beloved Greater Lord 𝗟𝗚𝗏𝗏𝗏𝗏's lasting legacy, a treasure trove of collected knowledge. After centuries of tireless research on the Akasha, the Academia created one of its most ingenious inventions, the Akasha Terminal. As long as you are within Sumeru's borders, you may use an Akasha terminal to connect directly to the Akasha and access any और ये knowledge पूरे you need. ट्री आकाश है, इसीलिए टर्मिनल के साथ कनेक्टेड रहता है। मेरे को यही लगता है। प्राउलर भाई को पता होगा, गाइस जाके प्राउलर प्लेस को देखो, वो भाई अच्छा से समझाता है, नॉलेजेबल भाई है वो अभी भी लाइव कर रहे होंगे शायद से, देखना एक बार, चल रहा होगा उनका लाइव। Until recently, it was Prowler standard practice place. to only issue हाँ Akasha देखना terminals to कर रहे हैं ना outlanders वो who अभी। spent an extended amount of time in Sumeru. However, this policy was recently changed, and now all Be right travelers back are चल रहा है। issued one upon arrival. Here are your Akasha terminals. Please handle them with care. वो आकाशा टर्मिनल मिला। It kind of looks like a leaf. To activate it, simply hold it in your hand and say the following phrase to yourself. May the mighty God bless us with their voice of wisdom. Oh, says this little doodad lets you access knowledge. Maybe we can use it to find a way to meet Lesser Lord 𝗟𝗏𝗏𝗏𝗏. Let's give it a try. अबे बच्ची के साथ क्या May मिल the रहा है? mighty God bless us with their voice of wisdom. ओह चलने लग गया भाई ये तो, रोबोट। Just now, something clicked, and Paimon suddenly knew how to use this thing. It seems all we need to do is concentrate on what we want to know, and bam, you get it. Oh, that'll come in real handy. Exactly. That is the power of the Akasha. And with that, let me officially welcome you both to Sumeru City. May the wisdom of the Dendro Archon always be your guide. हाँ भाई Okay, now खुद ही that we're बच्ची in, है we डेंड्रो can आर्कॉन check इस the बार। Akasha मैं डेंड्रो of आर्कॉन Lesser सेव Lord करना चाहता हूँ, पर Let Paimon try. मेरे को जोंगली चाहिए। 500 years ago, the sages found a newly born deity from within some scorched ruins. The deity now resides in the sanctuary of Suristana. इसके अंदर Pretty रहता है। similar to what Kali was telling us. Okay, next, let's concentrate on asking how to meet her. Huh? Paimon doesn't sense anything. The Akasha didn't respond to Paimon's question. Oh, come on! Focusing on this question feels like when you have something you're trying to remember and it's on the tip of your tongue, but you just can't think of it. हाँ यही होता है, मेरे साथ भी यही होता है। मेरा एक दोस्त है, उसके साथ बात करते करते मेरे साथ भी यही होता है। टंग के टिप पे होगा बात, पर मुंह से नहीं निकलती। Oh, smart idea. But what are you going to ask it? Multiple Akasha still impact knowledge based on person's identity. Could it be because we're outlanders and we've only just arrived in Sumeru? You know, हर चीज में पाइमन को जल्दी रही। qualified to receive an answer to this sort of question or something. गाइस 10 लाइक कर दो, 10 लाइक। एक मिनट, मेरे को एक काम आया। क्या हो गया? You too? Well, glad it's not
just Paimon. एक मिनट गाइस हाँ गाइस मैं आ गया। कहाँ पे थे हम? यहाँ पे। चलो Uh-oh. Paimon's getting all teary-eyed all of a sudden. It feels like the people of Sumeru really missed their Archon. Well, seems no matter which way we try, we can't find anything that'll lead us to Lesser Lord Kusanali. Guess our only choice now is to try meeting with the researcher that Tighnari recommended. He's from Sumeru and even has a position in the academia. Maybe he'll be able to access more info from Natasha. Let's see. Tighnari wrote an address on the Voice of envelope. Akasha. Oh, it's not fun. Let's head over and have a look. Hopefully he's at home. भाई लैग मारने लग गया गेम। आप सही हो। Hello, are you Rohawi? Yes, that's me. Rohawi. Can I help you? Great. You see, Tighnari sent us here and... What? Tighnari? Please, there's no need to say anything, really. Sure, I admit that the article I published last month wasn't my best work, and maybe the data didn't produce the most convincing results, but... Here, this is a letter from Tighnari. Oh, let me see. Oh, ooh, what a relief. You two nearly scared the life out of me. So you two just have some questions for me? Seems even Tighnari acknowledges my innate ability for procuring information. So, what is it you two would like to know? We want to meet with Lesser Lord Kusanali. Do you know a way we can do that? You mean you want to meet the Dendro Archon herself? This isn't exactly my area of expertise, but let me see what I can find in the Akasha. क्या भाई आग बंद करके रोबोट जैसा कुछ चला दिया। Respond to my query. क्या डेंड्रो आर्कोन इतना आसान से थोड़ी मिल जाएगा? What about your abilities for getting information and all that?
Well, as I said, this isn't my area of expertise. I am but a lowly researcher, so the Akasha doesn't see a need for me to know more about the Dendro Archon. All I know is that ever since Lesser Lord Kusanali returned to Sumeru, she's never left the sanctuary of Surasthana or made a public appearance. Huh. Didn't expect her to be such a mysterious figure. The Dendro Archon is somewhat of a recluse. Perhaps she just doesn't want to entertain visitors, which would explain the lack of information in the Akasha. Aw, but then what can we do? No need to worry just yet. I'm only hypothesizing here. You could certainly try asking around and see if anyone else has ideas. And besides, you two should consider the bright side of things. Not being able to see Lesser Lord Kusanali may not be a bad thing. In this world, there will always be information you cannot obtain from the Akasha and things you can never accomplish. Knowing when to yield is a form of wisdom. Take me, for example. That's right. It's a miracle if my brain cells can spit out one paper every 3 years. But Tighnari? That guy can publish 3 papers in just a single year. Okay. Thanks for your advice. Don't mention it. If you two ever want information about things like who's been promoted within the academia or relations between the 6 great sages, come find me. Hey, come on. This is a survival skill at the academia. Oh, Paimon's expectations were pretty low, but this is so low, it's like digging holes in the dirt. So what do we do now? Even if we want to talk to someone, we don't know anybody here. Huh? Like who? Ad Astra Abyssosque. Oh, you're right! Catherine! The Adventurers Guild has its own intel network. Let's hurry and find her. I've been handed all the cumbersome tasks again. धक्का वक्का मार के घुस जाऊंगा भाई. हट जाओ चुपचाप. Ad Astra Abyssosque. Hello, Traveler and Paimon. Catherine, we need your help with something. Understood. The Adventurers Guild is always ready to serve you. With what do you require assistance? We want to meet with Lesser Lord Kusanali. Do you know a way we can do that? You two wish to meet with Sumeru's Archon. Understood. Please wait. I apologize, but I am unable to call up any relevant information in the Akasha. I'm also unable to locate any pertinent information in my personal memory. Aww, another dead end. Well, if Catherine can't help us, then we really don't know anyone else to ask now. Please do not worry. I may know of someone who can help you two. In Sumeru, the Adventurers Guild does not serve as the vanguard of information. Rather, there are numerous active mercenary groups collectively known as the Eremites. They take on various contracts and work all across Sumeru, so they naturally accrue intelligence. An Eremite brigade called the Corps of 30 is in charge of Sumeru City's defenses. Not only are they the oldest brigade, but they are responsible for managing and coordinating the affairs of all other mercenary brigades. Corps of 30? What a weird name. Supposedly, they are named as such because their ranks numbered 30 at their inception. Asphalt, an advisor with the Corps of 30, maintains good relations with the Adventurers Guild. Though he's already retired, he and his words carry great weight within mercenary circles. If you'd like to get in contact with him, you can find him at the Corps of 30's headquarters, the Citadel of Rexar. क्या था?
थैंक्स से You're बच गए। welcome. I wish you two the best of luck. We look forward to your exploits in Sumeru. Alright, off to the Citadel of Razor we go! कहाँ पे जाना है मुझे? ऊपर 109 वॉट्स यूज कर रहा है भाई पूरा जीपीयू टेम्परेचर भी 79 डिग्री है भाई साहब। यहीं पे थोड़ा ज़्यादा जीपीयू यूटिलाइज हो रहा है कि मेन सिटी में हम लोग लैग हुआ भाई कितना गंदा वाला। ऊपर जाने का रास्ता कहाँ पे? ओ वहाँ पे घूम के जाना पड़ेगा। ऑप्टिमाइज नहीं है सुमेरु जहाँ अब यहीं से दिख रहा है इतना ज्यादा, इतना तगड़ा लैपटॉप में भी अगर तुम लैग मारेगा जिनसे थोड़ा सा इस सिटी के आसपास तो क्या होगा? कहाँ पे आना था मुझे? पीछे जाना था, मैं कहाँ पे घूम रहा हूँ? प्रसन्नजीत पंडा, हाय। दीपन, रात के 11 बजे क्या कर रहा है? सो जा। हीरो का देखना, हेयर स्टाइल देखो भाई कितना खतरनाक है। लिपन तो मैंने तुझे बोला था ना जल्दी आने को, इतना लेट क्यों किया तूने? हाँ? और एक बात बता, व्हाट्सएप हो गया तेरा? सॉरी फॉर अनइंस्टॉलिंग योर व्हाट्सएप। Wait, seriously? That's it? Afraid so. The Aramites aren't terribly religious, so we don't know much about divinities. As far as the Akasha goes, we can access even less than you. We originally came from the desert. The gods there died off long ago. Since those days, we've used our own two hands to carve out. हाँ जी, खाना वाना हो गया ना? मैं भी जा रहा अभी खाना वाना खाने। It isn't just us, though. If you ask me, I think most Sumeru aren't interested in Lesser Lord Kusanali. लिपन, ये क्या हो रहा है? क्या लिख रहा है ये? Just take the academia, for example. They're the ones who truly rule Sumeru. Although they believe in gods, most of them only hate greater Lord Rugadavada. भाई विश्वजीत तूने लिपन पूरा प्रसन्नजीत का मुंह ही बंद कर दिया, डर गया वो। Lesser Lord Kusanali. My dinner is done. Okay. तो फिर रात के 11 बजे क्या कर रहा है? पढ़ाई कर जाके? तेरा एग्जाम है ना MBA का? Hold her in greater esteem. Not to mention that Lesser Lord Kusanali never makes an appearance. And the academia never announces anything about her. As far as the people of Sumeru are concerned, she's just a god that exists. And that's all. Really? After hearing all of that, Paimon sort of feels bad for Lesser Lord Kusanali. But who knows? मैं भी जल्दी स्ट्रीम एंड करने वाला हूँ। 11 बज गए। मम्मी खाना खाने बुला रही है। Doesn't worry about her reputation among people like us. All right. Well, thanks for the info, Osfond. मेरा लाइव स्ट्रीम खत्म होगा और 15-20 मिनट बाद, जितना मुझे पता है, क्योंकि ये क्वेस्ट तो आज खत्म नहीं होने वाला, इसको टाइम लगेगा, तो एंड जल्दी ही करूंगा मैं। Seems Osfond was right about most people's attitudes here. विश्वजीत बिस्वाल भाई, हंसी के मारे वो मर जाएगा पेट दर्द करके उसका। वाह, पाइमन को आया गुस्सा। But the harder we try, the more helpless everything
person in this entire city who cares about Lesser Lord Kusanali? आज के लिए मैं सोच रहा हूँ इतना ही You रख two दूँ। are interested in Lesser Lord Kusanali? Huh? Who are you? From the sound of it, you two are Outlanders who recently arrived here. You've been asking around for information on Lesser Lord Kusanali, right? Oh, I'm sorry. I forgot to introduce myself. I'm 𝗟𝗓𝗓𝗏, one of Lesser Lord Kusanali's faithful followers. वाह, Really? Then do you know how we can meet with her? I'm afraid I can't help you with that. But your conversation earlier did happen to remind me of a legend about the Dendro Archon. Sure, it goes like this. Long, long ago, there was a man who heard a prophecy. It predicted that a great calamity was about to befall him. Panicked by what he heard, the man sought out the Dendro Archon in hopes that she would bless him with the wisdom to help him escape his predicament. The man journeyed across deserts and rainforests and experienced tribulations of every kind. However, he still couldn't find any trace of the Dendro Archon. In despair, he thought, alas, the Archon has abandoned me. He then had no choice but to sorrowfully resign to his fate. Okay, and then what happened? And then the calamity came. But to his own surprise, the man felt somehow emboldened by the trials of his journey. By relying on his own strength, he managed to overcome थोड़ा इंग्लिश भी सीख जाएगा। At that moment, आर्मी में काम करेगा ना, देख ले जल्दी। आर्मी मैन was, in fact, an avatar of the Dendro Archon. मीम बनेगा, आर्मी मैन don't know how to use a cycle. Do you now understand? She and कल फोन लेके आना, कल प्ले स्टोर डिलीट कर दूंगा तेरा। यूट्यूब से कितना एक दिन का 2-3 लाख रुपए तो मिल ही जाता है मुझे। Every ray of sparkling sun and every breath of dancing wind. So long as you continue to think and ponder, will be wherever you go. Yeah, thanks for the story. यूट्यूब से मुझे 2-3 लाख रुपए मिल जाता है एक दिन का। मतलब सोच ले महीने का कितना होगा, फिर साल का भी कितना होगा, सोच ले। It seems like this story is also तुझे खरीद लूंगा मैं, प्रसन्नजीत पंडा, तुझे खरीद लूंगा। 𝗟𝗓𝗓𝗏, since you worship Lesser Lord Kusanali, पता है 1 लाख कमाता है तेरा भाई, तेरा घर आएगा इसमें, तेरा घर। Of course. So did you two know that प्रसन्नजीत पता तेरा घर आएगा इसमें 1 लाख रुपए में। I'm terribly sorry, but खरीद लूंगा मैं। come up now. कल आना क्रिकेट खेलने, तुझे खरीदूंगा, वीडियो लगाऊंगा तेरे पे। Hey, wait! What the heck just happened? प्रसन्नजीत पंडा is a good guy. He's eating too much good that he is too sweet. For someone. Lol. 𝗟𝗓𝗓𝗏 was acting super nervous just now. You think they're looking for her? This stinks. We finally managed क्या to हो find गया the यार? lead about Lesser Lord Kusanali. We can't let them get in the way now. स्ट्रीम का बंद हो गया। Then we can catch up with 𝗟𝗓𝗓𝗏. Hey, have you two seen a brown-haired girl wearing a purple top and a long blue dress? We're looking for her. Did she have bandages wrapped around her wrists? Yes, that's her. Did you see which direction she went? Yeah, she went that way. यार ये क्या हो गया, बंद क्यों हो गया स्ट्रीम फिर से? यार ये बड़ा दुविधा में डाल देता है कभी कभी तो ये स्ट्रीम। कभी कभी फ्लक्चुएट तो होगा ही भाई, इसका कुछ ना कर सकते। आ जाएगा फिर से, कर सकते 20,000 19,000। गाइस कोई स्ट्रीम से मत जाना यार, मेरा थोड़ा दिक्कत हो गया, नेट फ्लक्चुएट हो गया सर्वर शायद से। स्ट्रीम तो चल रहा है यार पर अटक अटक के। गाइस आई एम बैक। मेरा थोड़ा फाइबर का कुछ दिक्कत हो गया था, तो दिक्कत हो गया था थोड़ा सा अभी, पर आई एम बैक। हाँ हाँ इसे खत्म करके प्रसन्नजीत में बंद कर दूंगा स्ट्रीम, चिंता मत कर तू। Quick, after her.
स्ट्रीम बीच में अटक गया था, मैं समझ सकता हूँ दुविधा, तो मैंने उसको ठीक किया। थोड़ा वेट करने के बाद हो जाता है। There is no escape. अब आ रहा है स्ट्रीम, अब सही है। मेरा थोड़ा नेट का दिक्कत हो गया था प्रसन्नजीत, अब सही है नेट मेरा, अब तो सही आ रहा ही होगा मेरे को लग रहा है। यार पूरा गू हो गया स्ट्रीम का। बीच में पूरा बिटरेट डाउन हो गया। चलो मैं सोच रहा हूँ रखते हैं यहीं, अब इसके अंदर चला जाता हूँ, सही रहेगा। यहाँ पे ऐसे फेस करके खड़ा हो जाता हूँ। चलो चलो गाइस, रहता हूँ मैं। आज का स्ट्रीम में इतना ही। जो लोग भी स्ट्रीम में ज्वाइन किए हो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन माई स्ट्रीम, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर बीच में स्ट्रीम कट भी हो जाता है तो जाना मत रहना, क्योंकि मैं फिर रिकनेक्ट करूंगा, दिक्कत नहीं। मम्मी चलो खाने बुला रही है, चलो बाय बाय गाइस। कल मिलते सुबह शायद से 10-11 बजे मैं करूंगा स्ट्रीम। जो भी स्ट्रीम में मेरे साथ जुड़े हो, प्रसन्नजीत पंडा, विश्वजीत बिस्वाल, सबको थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट गाइस, गुड नाइट, गुड नाइट गाइस, गुड नाइट गाइस, गुड नाइट।